हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने साइंटिफिक थ्योरी की जो डेफिनेशन है उसको हमने समझा और इस टर्म से जुड़ी हुई कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं हमने उनको क्लैरिफाई किया। इस वीडियो में हम एक और साइंटिफिक टर्म को समझेंगे एंड दैट टर्म इज़ साइंटिफिक मॉडल। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, वो थ्योरी और मॉडल को कंफ्यूज हम कर देते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्पेंड a few minutes to understand what the term model means in science. So that is the fourth term that we are discussing. So what is a scientific model? So हमने scientific theories की बात की, right? पिछली वीडियो में which are our most reliable descriptions of the universe. ठीक है, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो हमारी मोस्ट रिलायबल डिस्क्रिप्शंस हैं यूनिवर्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक साइंटिफिक थ्योरी जो है हम उसको अप्लाई करना इंटायरली किसी एस्पेक्ट को, दुनिया के किसी पहलू को समझने के लिए एक साइंटिफिक थ्योरी को एक साथ, उसकी एंटायरिटी को एक साथ अप्लाई करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ओके, so applying a scientific theory in its entirety, okay, in its entirety, यानी कि उसको एक साथ अप्लाई करना दुनिया के किसी पहलू को समझने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो जो साइंटिफिक मॉडल होता है बेसिकली वो इस चीज़ का एक सोल्यूशन है। सो इस साइंटिफिक जो मॉडल है फिर इस हिसाब से इट इज़ बेसिकली a simplified let's say version of a scientific theory. I hope you can read this. So a scientific model is basically a simplified version of a scientific theory. Why? Because applying a scientific theory in its entirety to some aspect of the world is complicated. So what scientists do is that they create a scientific model which is a simplified version of a scientific theory. और ये जो simplified version है, जो कि हमारा मॉडल है, that can either be, तो या तो वो हो सकता है मैथमेटिक्स driven, means it can either be based on mathematics, or it can be simulation driven. So it can either be based on mathematics or some simulation, some computer simulation, let's just say. और इस तरह एक साइंटिफिक जो मॉडल होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम थ्योरी को यूज़ करके ऐसी प्रिडिक्शंस हम करें जिनको हम आजमा सकते हैं। ओके, सो हम make testable
testable predictions. Okay, predictions. So साइंटिफिक मॉडल के बगैर हम साइंटिफिक थ्योरी को यूज़ करके आजमाई जाने ऐसे ही हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते जो हम आजमा सकते हैं. सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ creating a scientific model is that it allows us to use the theory to make predictions which we can test. Okay, so in short, we test scientific theories by creating scientific models. अब ये समझना ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में लेटर एट सम पॉइंट आई विल टॉक अबाउट वन मोर crucial tenet, crucial part of modern cosmology, and that is the inflationary model. So this is what a scientific model means. So that's it for this video. In the next video, we will go back in time, even before agriculture existed, to discuss how our ancestors explained the universe when they looked up at the night sky. So if you are still finding this interesting, please consider subscribing, share this video with someone who you think would benefit from it. Thanks for watching, and I will see you next time.